Hello students, today we'll start chapter Mensuration, or the other name is Surface Area and Volume. Here we are going to discuss surface area of 3D solid shapes. It is observed that you don't have major problem in the sums, but you face problem in remembering formulas. How to remember all the formulas, it is a major problem for you. So let us first of all fix that problem. I'm going to show you how to learn all the formulas with the help of teaching aids. First of all, we'll talk about cylinder. See students, it is a rectangular sheet of paper, right? As you know, area of rectangle is length into breadth. This is length of the sheet and this is breadth of the sheet. Area of rectangle is length into breadth. Correct? Now, if I fold this sheet to make a cylinder, I have folded the sheet to make a cylinder. See, it was rectangular. When I fold it, its length turns out to be a cylinder. Its length turns out to be a circumference of a circle. Here, the length was there. Now the length is changed to circumference of a circle. ये length थी पहले. As soon as I folded it, जैसे मैंने fold करा, वो नीचे circle का circumference बन गया. L is changed to circumference of circle. And what is formula of circumference of a circle? 2 pi r. Correct? So the value of L is now 2 pi r. And see the breadth. This was breadth. When I folded it, this becomes height. Correct? So the value of B is h. So your answer is 2 pi r h. This is CSA of cylinder. Whenever you get any shape which is in this form, ऐसी form में है, देखो ऊपर से भी खाली है, नीचे से भी खाली है. Only this is the area which you have to paint, which you have to cover. Then it is known as CSA of cylinder. Correct? If you get any object where, for example, you can see this, only this, when you have to color this area, this is CSA. I'm not talking about top and bottom. So this was CSA. Now what about TSA of a cylinder? TSA of cylinder. See students, what is difference between CSA and TSA? When we talk about CSA, it is all about sides, around figures. It does not involve top and bottom. When I talk about TSA, total surface area, it involves top and bottom also. इसमें आपको टॉप और बॉटम लेके आना है. जैसे ये फिगर है, इट इज साइलेंड्रिकल. करेक्ट? इसमें इट इज 2 pi RH. The surface area of this is 2 pi RH. But when you see the top of it, जब आप इसका टॉप देखते हो, it is pi r square. When you, because it is a circle. अब TSA में as I told you, आपको टॉप भी लेना है. तो it is a circle. Area of circle is pi r square. So you have to add 1 pi r square into it. ये टॉप हो गया. अब बॉटम भी चाहिए. See the bottom shape. Bottom shape is again a circle. If it is a circle, what is area of circle? Again pi r square. So 2 pi r h plus 2 pi r square, 2 pi r h plus 2r. Sorry, it is h plus r. Sorry. 2 pi r h plus r. ठीक है? This is TSA of cylinder. Now the shape cylinder, I guess it is clear. Its CSA and TSA is clear. And its volume will be, volume of this is pi r square h. Pi r square h. Correct? When I keep a circle and I keep circles above it, ऐसे ऐसे circles रखते जाएंगे तो it makes a cylinder.
So pi r square into h, it gives you pi r square h. So I hope in this way you can remember the formulas. In this way you will not forget the formula of cylinder. Now let's move to the next figure, which is cuboid. Cuboid is a figure like this. ऐसी कुछ figure होती है cuboid, right? In this, see, all the faces have different dimension. Length is different, breadth is different, height is different. Where L, B, H are different, it is known as cuboid. Three-dimensional figure where length, breadth and height is different. Now but just see, this is its first face. Let us write the counting. This is its first face. It is its second face. It is third. I am writing counting so that later on it is easy for you. Fourth, fifth, sixth. When I talk about CSC of cuboid, जब मैं CSC की बात करूँगी, as I told you earlier, उसका मतलब होता है सिर्फ चारों साइड्स वाला या साइड्स वाला, ऊपर और नीचे छोड़ना होता है. टॉप एंड बॉटम यू विल लीव. तो अब हम टॉप और बॉटम की बात नहीं करेंगे, बाकी एरिया देखेंगे. सी बच्चा, दिस इज योर फर्स्ट फेस. इट इज रेक्टेंगुलर. ये लेंथ है, ये हाइट है. दिस इज लेंथ, दिस इज हाइट. तो इस फेस का एरिया हो गया एल एच, एल इंटू एच, एल एच. एंड यहाँ पे आ जाइए, ये तो h है ही एज यू नो. नाउ दिस इज b, ब्रेड्थ. इस फेस का एरिया हो गया बी एच. नाउ लेंथ वॉज दिस, तो ऑपोजिट टू इट इट विल बी लेंथ. ये लेंथ है और ये हम पहले h लेके चल रहे हैं, तो इस फेस का एरिया भी हो गया एल एच, एल इंटू एच. नाउ कम ऑन द लास्ट फोर्थ पार्ट. इट इज ब्रेड्थ, इट इज हाइट, तो इस फेस का एरिया हो गया बी एच. इफ यू सी इन टोटल, एल एच कम्स 2 times, BH also comes 2 times. 2 बार LH आया इन दोनों फेसेस का, वेयर माई फिंगर्स आर देयर. एंड 2 बारी BH आया. दैट इज 2 times LH प्लस 2 times BH, taking 2H common, L plus B. This is your formula of CSA. Correct? Now if I have to talk about TSA, TSA में ये तो होगा ही होगा. We just have to add top and bottom. टॉप में देखो ये क्या था, दिस वॉज गिवन लेंथ, दिस वॉज गिवन ब्रेड्थ. हाइट बेटा ये है, दिस इज हाइट, दिस इज नॉट हाइट, दिस इज विड्थ. सो एरिया ऑफ दिस फेस इज एल बी. टॉप का एल बी होता है, बॉटम का भी क्या हो जाएगा एल बी. एल बी हियर, एल बी हियर. तो हाउ मेनी टाइम्स एल बी? 2 LB. So taking 2 common, LH plus BH plus LB. This is TSA of cuboid. Easy. Similarly, now we are left with volume only, which is L into B into H. Length into breadth into height. नीचे rectangular shape है जिसका एरिया होगा L into B. बस rectangular shape में when you involve height, you'll get LBH. Correct? Now moving towards last shape, which is cube. Which is cube. But a cube is something like this. ऐसा cube कुछ. Correct? How many faces are there? 6. What is difference between this and this? Here, all the length, breadth, height are different. Here, all the length, breadth, height are same. Whatever is L, same is B, same is H. Everything is same. इसको हम बोलते हैं क्यूब, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड. यहाँ पे हर फेस स्क्वायर शेप है, देख लो. इट इज़ अ स्क्वायर, इट इज़ अ स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ सेम है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट CSA ऑफ क्यूब, CSA ऑफ क्यूब, दिस इज ऑल्सो साइड, दिस इज ऑल्सो साइड, एवरीथिंग इज द सेम. L किसको रखे, B किसको, एवरीथिंग इज सेम. तो साइड नेम रख लेते हैं, सारा कुछ ही साइड है, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी, हाइट भी. सो फर्स्ट फेस इज साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर. सेकेंड इज अगेन साइड स्क्वायर. थर्ड साइड स्क्वायर. फोर्थ साइड स्क्वायर. मीन्स 4 टाइम साइड स्क्वायर. इफ इट इज TSA तो 4 तो है ही है, वी विल इन्वॉल्व टॉप ऑल्सो. अब टॉप इज ऑल्सो साइड स्क्वायर एंड इट्स बॉटम इज ऑल्सो साइड स्क्वायर.
टॉप साइड स्क्वायर बॉटम भी साइड स्क्वायर, तो 4s स्क्वायर में 2s स्क्वायर और आ जाएगा, दैट इज 6 साइड स्क्वायर. एंड इफ वी टॉक अबाउट वॉल्यूम, दैट इज साइड इंटू साइड इंटू साइड. सेम है इसका क्यूबॉइड जैसा, बट व्हाट इज डिफरेंस, वहाँ लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग होती है तो LBH लिखते हैं, यहाँ एवरीथिंग इज सेम तो साइड इंटू साइड इंटू साइड लिखते हैं. सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प you to understand the concept of mensuration now, because major problem we feel in formulas, later on sums become easy for you. So I hope this will be very helpful for you to learn all the formulas. Thanks and have a nice day.